Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? Hope you all are alright. Allah bless you all. So today we are going to start our lesson number 62, unit number 8 exercise. It's about peace, the poem. इसकी exercise करने जा रहे हैं. Let's focus on the theme first. Dr. Hartman क्या कहती हैं? Nature teaches us lessons through wind, water, mountains and light. Wind in the form of storm smashes everything. In its rage, it destroys trees, fields and buildings. But when the wind is gentle and cool, it gives life to birds and humans. We have to experience storm to enjoy peace. Okay? Theme अपने ज़हन में रख के अब अपने एक्टिविटीज पे आते हैं. पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग. फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक्सट्रीमली नॉइजी, बहुत ज़्यादा शोर वाला. पोएम में ऐसा कौन सा वर्ड है जो एक्सट्रीमली नॉइजी को रिप्रेजेंट कर रहा हो? सो रोरिंग इज आल्सो द वर्ड. रोरिंग, एक्सट्रीमली नॉइजी मीन रोरिंग. टू बी ब्रोकन वायलेंटली नॉइजीली इनटू पीसेस, क्या होगा? Smashing. Good. To make something level by using a rake. Rake is a equipment. Okay. तो इससे जब जमीन को लेवल किया जाता है तो क्या उसे कहते हैं? उस अमल को क्या कहते हैं? प्रोसेस को क्या कहते हैं? Yes, it's raking. Very good. Okay, now to make something turn rapidly round and round a central point. G. So it's spinning. Lasting or existing forever, हमेशा रहने वाली. क्या कहेंगे? Eternal. To speak or say something quietly using only one's breath so that the people closest to one can hear. कि जो करीब वाले से वही सुन सके. तो ऐसी बात, ऐसे इस तरीके से बात करने को कहते हैं whisper. Okay? Look at this activity. Give synonyms for each of the following words. A roaring का synonym बताइए. Roaring, crying, howling. Okay. Smashing, crashing, spinning, rotating or whirling. Yes, stillness. It's peace. Co-origin. Okay, so let's focus on another activity. Choose the appropriate connotations. Connotation meaning जो आपका ज़हन बताता है, जो आपको मफ़हूम बताता है. Which would you rather be called? Thrifty or cheap? Thrifty. Which is more serious, problem or disaster? Guess it. Yeah, it's B, disaster. Which is more polite, gulp it or sip a drink? It's sip a drink. Which would you be if you hadn't eaten for several days? अगर आपने कई दिन तक नहीं खाया क्या होगा? Hungry होंगे या starving होंगे? Starving is correct. Which would you be after a walk in the mud? कीचड़ में अगर आप वॉक करते रहे तो क्या हो जाएगा? फिल्थी या डर्टी? इट्स वेल डर्टी. वेरी गुड. लेट्स फोकस ऑन अनदर एक्टिविटी. नाउ एक्सप्लेन द फॉलोइंग idioms and find their Urdu equivalents. It is no use of crying over spilled milk. अब पछतावे क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत? क्या कहते हैं? It is no crime when harm has been done due to your own mistake. जब गलती आप ही की तरफ से हुई थी और अब वो वक्त गुजर गया उसको सुधारने का, फिर इंसान पछता रहा होता है. तो इससे कहा जाता है कि अब पछतावे क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत. Now do not put off till tomorrow what you can do today. It's very important. आज का काम कल पर मत डालो. So we should do every task daily. We should not postpone the work till the next day what we can do today. Okay, so next, out of the frying pan into the fire.
क्या है? आसमान से गिरा, खजूर में अटका. Caught in another trouble as soon as came out of the first one. Clear? So out of sight, out of mind. आंख ओझल, पहाड़ ओझल. That the thing that is not before our eyes is just like lying to the other side of the mountain. So as you sow, so shall you reap. जो बोगे वही काटोगे, जैसा करोगे वैसा ही होगा. Whatever man does in his life, he has to face its result. If he does good, he faces good result. If he does evil, the result is also bad. So these are the human. Now look at this answer the following question. Try to understand the question first. How is wind described in the first stanza? First stanza में wind को किस condition में describe किया? उसकी क्या condition है? क्या वो बहुत भयानक शक्ल में है या अच्छी शक्ल में है? With what wind is compared in the first stanza? पहले stanza के अंदर wind को, हवा को किसके साथ कंपेयर किया गया है? कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा जानवर है, कौन सी चीज़ है जिससे उसको कंपेयर किया गया? What is wind doing to all man's work? में हवा जो है वो तमाम लोगों के कामों के साथ क्या करती है? Clear? What is the wind doing to all man's work? How does the scene look like when wind is still? जब बारिश रुक जाती है, मौसम खुशगवार होता है, तो किस तरह का लगता है? हाउ डज द सीन लुक लाइक? कैसा मौसम लगता है जब बारिश रुक जाती है या हवा रुक जाती है? व्हाट कंपैरिजन इज मेड इन द सेकंड स्टैंजा? सेकंड स्टैंजा के अंदर विंड का कंपैरिजन किसके साथ किया गया है? क्या प्रॉब्लम डिस्कस हुई है उसमें? सो लुक एट दिस, मेक योर ओन सिंपल आंसर्स इन उर्दू, देन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. Look at this activity, kind of pronouns. You know very well about the pronoun. So there are different kinds, but here we mention only demonstrative pronoun, reflexive and interrogative pronoun. तो ये तीनों pronouns किस किस्म के हैं? Demonstrative, मुजाहिरा करने वाले, तो इशारा करने वाले. Reflexive, जिसमें आपका रिफ्लेक्शन नजर आ रही है, आप माय सेल्फ वाले जितने भी होते हैं वो रिफ्लेक्सिव होते हैं. And then interrogative pronoun, obviously सवालिया, सवाल करने वाले. Now look at the activity, hand me that hammer. वो कुल्हाड़ा मेरे हवाले करो. So that one is our demonstrative pronoun. I myself in the mirror, मैं खुद ही मिरर में हूँ. Myself, you know that all the pronouns which have self with them are called reflexive pronoun. Clear? So I saw myself in the mirror. Myself is a reflexive pronoun. Who is there? कौन है वहाँ? So it's a question, kind of question. So who is the interrogative pronoun? He himself will be our new friend. Himself is our reflexive pronoun. Is this your teacher book? This is a reflexive pronoun. Now, which is your pen? So which is, is this your teacher's book? क्या ये तुम्हारे टीचर की किताब है? तो this is a demonstrative pronoun. Which is your pen? This is question. Question is interrogative pronoun. So all these activities you must do practice at home. Try your level best to do it at home and learn it by heart. Wish you all the best. Take care. Allah Hafiz.